immature word was very personal to Krafton. No, my attack was not against Krafton, it was against the ecosystem. बहुत प्लेयर्स भी वैसे बिहेव करते हैं. कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स है, कोई ब्रांड्स है, पब्लिशर्स इतना नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली पब्लिशर्स हैव द हैंड्स फुल. ई स्पोर्ट्स अ वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑफ द पब्लिशर्स लाइफ. सो मैं पब्लिशर को दोष नहीं दूंगा इकोसिस्टम के लिए, बिकॉज देयर आर इनफ गेम्स दैट विदाउट द पब्लिशर्स इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा चलता है. So I will not put the blame on publisher. But we made a very bold statement a couple of days ago, and we are no longer operating in the esports team's business of BGMI. We have suspended our operations, and हमारी अभी कोई esports team नहीं रहेगी BGMI में. तो इसीलिए it's important to talk about that a little bit as well, because I think it has a direct impact on the BGMI ecosystem, it has a direct impact on the esports ecosystem, and ये ज़रूरी है, because the ecosystem right now is not sustainable. It is not in the place where it could be. It has potential, yes, but अभी तक वो potential capitalize नहीं कर पाए हैं. Yes, there are some people that are making money, but there are way more people that are losing money, and that is why you see इतने सारी orgs आ रहे हैं, जा रहे हैं. दे कमिंग, दे स्पेंडिंग मनी. काफ़ी सारे ऑग्स आते हैं, बड़े सैलरी के प्रोमिसेस देते हैं, फिर कुछ महीनों बाद सैलरी नहीं दे पाते हैं. And that's not a stable environment for anyone to try to make their career. We have had so many athletes that have reached out to us and have spoken to us individually and said that they want to leave the ecosystem because उनके लिए ये sustainable नहीं है, उनके लिए ये वायबल नहीं है. उनको अपने या तो करियर पे ध्यान देना है, या तो वापस पढ़ाई पे ध्यान देना है, या तो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, या तो कुछ और ऑप्शन देखना है, बिकॉज दे डोंट सी बीइंग अ बीजीएमआई एथलीट एज अ स्टेबल करियर. और मैं ये स्ट्रगलिंग टियर 2 और टियर 3 प्लेयर्स नहीं, ये टियर 1 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, बीन पेड मोर देन 1-2 लाख रुपीज इन सैलरी, और जो ट्रॉफीज जीत चुके हैं, ये उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. तो it's not as stable as से लोग बाहर से बहुत ऐसा रोजी पिक्चर दिखता है. It's not that way. It's a struggle. Every player is struggling, every org is struggling, every tournament organizer is struggling, every brand is struggling, sponsors are struggling. Everyone is working hard. ऐसा नहीं है कि बस सब बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, but right now everyone is struggling. So in this struggling phase, it doesn't make sense for us to invest more money when there are no returns. As some of you all saw, मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखा भी था कि we have spent a lot of money in the ecosystem. Just in the last 1 year, we have lost about 1.5 crores, 1.3 crores to be. I think वो एक correction थोड़ा भी धीरे धीरे I think आई. हाँ, means there will be a market correction. As of right now, temporarily, because the ecosystem is unstable, is immature, is in a situation where it doesn't make sense. Like I told you, you can do the math. अगर हम हर बड़ा LAN event इंडिया में जीते, every single LAN event, BGIS, BGMS, BMPS, Apthra Sky, जो जितने भी events होते, अगर हर LAN event हम जीते, we are still a loss-making venture. Still. And we are not even the highest spending team. I think हमारा team spends are very modest. Like we spend a lot less than most teams. हमारी salaries, हमारा boot camp facilities, everything that we provide is just what is absolutely required. Like we've all been athletes before, so we know what the requirements are. We ensure that players have what they need. कोई लग्जूरियस अमेनिटीज ऐसा नहीं है कि बैठ के चिल करे, आराम करे. रिटायरमेंट होम नहीं है ये रिजॉर्ट नहीं है. दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, परफॉर्मेंस ड्रिवन, वेयर प्लेयर्स नीड टू विन. दिस इज सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, दिस इज सो दैट प्लेयर्स कैन प्ले बेटर. बट आई थिंक द डायरेक्शन दैट द इकोसिस्टम वाज गोइंग इन वाज दैट बहुत ज़्यादा, आई डोंट वांट टू से पार्टी जोन में, बट बहुत ज़्यादा रिलैक्स जोन में जा रहा था. इट वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड I don't think that's what all the org owners are working so hard for to fund. I don't think that's what the ecosystem is working so hard for to fund.
whether it is the orgs that are raising money, whether it is the tournament organizers that are raising sponsorship, whether it is the brands that are coming in or whatever. I don't think that is why there is so much effort being put in, so that the money is poured out and being spent in bars and nightclubs and luxury goods and all of that. I don't think that's where the right use of the money is. Honestly, I think ecosystem बढ़ाने के लिए there are better ways, and that's what we are going to focus towards.